When I started chalking out a financial plan for myself, I read a lot of books, I read a lot of blogs, and मैंने बहुत ज़्यादा YouTube videos देखे. But there was one thing that was missing in all of these, and that was that although the information was there in a very haphazard manner. None of it was actually organized. मुझे ये समझने में इशू आ रहा था कि why is it that I'm studying this? How is this related to personal finance? Why is this related to personal finance? All of this happened because all the information that I was gathering from various sources, though was adequate and appropriate, was unorganized. And this is what this is what motivated me to create this video. So if you're interested in knowing the organized way of creating a financial plan for yourself, stay tuned because we are starting right now. So after taking in information from all of these sources, be it videos, blogs or books, I decided to organize them. I organized them into a formal structure. So a good financial plan will structure itself around 6 fundamental pillars. And इन्हीं 6 fundamental pillars के बारे में मैं इस वीडियो में आज बात करूंगा. First of them would be, and the most important one would be, a regular source of income. Yeah, so आप सभी को लग रहा होगा, yeah, I do have a job and that itself is enough to count in as a regular source of income. But believe me, it's not. In these tough times, if you still have an employer who is giving you your monthly salary on time, you definitely are a lucky individual. So all of these scenarios has taught us one thing, that relying on one stream of income is not appropriate, which is why when I talked about regular source of income, I expected that हम सब के पास सिर्फ एक वो कमाई का साधन नहीं होना चाहिए. We must have various different streams of income. And by this I'm meaning having a stable flow of side income as well. अब इस side income को हम कैसे generate करें? How can we tap into all these streams of revenue? इसके लिए we must start building our assets. Now these assets are of two types. First would be an intangible asset. Intangible asset का example would be a skill. So let's take my example here. I learned graphic designing and video editing over this pandemic time. And after learning these skills, I am well equipped to take on any freelancing projects that I come across either through LinkedIn or through freelancing websites. So whenever, if I come across a project and some people are in search of an individual जो उनके लिए graphic designing भी कर ले and video editing भी कर ले, I am more than happy to do it. And obviously I'll do this as a part-time thing because I'm a student. I'll go to my college, I'll do all the fun things, but रात को when I'm a bit free, I can devote that 1 hour and I can do this, I can take this up as a part-time project, and which can guarantee me कि I earn a good side income even though I'm at college. Now this can apply for working individuals as well. अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहां पे कोई एक ऐसी स्किल है which is very fundamental and जो आपको नहीं आती, you must start acquiring it because you know that after acquiring the skill you will be much more employable, and you must know that next time whenever you are negotiating salary with your employer, you'll be in a better position to negotiate your salary and get the best out of what you deserve. दूसरी asset would be a tangible asset. इसके लिए मैं example लूंगा एक book का. Fine, if I'm an author, I wrote a book. I know that each and every time that book is sold in the world, I would earn some royalty being the author. And that would be a steady flow of income. That would be an income stream for me throughout the life. Same goes for blogs. अगर आप blogs लिखते हैं, if you start monetizing those blogs and अगर आपके पास अच्छा खासा traffic है, you can earn money from there as well. Let's take my example again. This is a YouTube video that I'm making. All these YouTube videos are those quality assets that I'm building for myself because I know 10 years down the line, जब भी आप में से कोई ये वीडियो देखेगा, I will earn 1 or 2 पैसा. See, the money here does not matter, but what matters is I am building a good quality asset, and eventually यही assets मुझे फ्यूचर में मेरी साइड इनकम बन जाएंगे जो जरूरत आने पर मुझे फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं. हमारे फाइनेंशियल प्लान के स्ट्रक्चर का दूसरा पिलर वुड बी अ गुड बजटिंग प्लान. यू सी, हमने इनकम तो जनरेट करनी शुरू कर दी एंड वी हैव वेरियस अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, बट दिस डज नॉट मीन कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए. हमारा सेव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसी के रिवॉल्विंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी मानी जाती है, द 50-30-20 रूल. ये कहता है कि आउट ऑफ 100 रुपीज जो भी आपकी इनकम है, यू कीप 50% ऑफ दैट
फॉर ऑल योर नीड्स लाइक कपड़ा, मकान, खाना, बेसिक ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दैट। जो भी आपकी नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी ऑफ दैट 50% ऑफ योर इनकम। 30% वुड बी allocated for all your luxuries and all your wants, be it a good vacation that you're planning, maybe fancy restaurant में आप अपनी family के साथ जाते हैं, or any other thing, even a movie, all of that will go into wants, and वही wants आप finance करोगे अपने 30% से। Finally जो 20% बचा, that would be your savings and those will be your investments. Obviously it may vary, because if you're a working professional, maybe you can afford to save 30% of your income. That is totally up to you, but define this rule for you, define this percentage for you कि मैंने इतना बचाना है, and that's that. So the thing is, even though इस budgeting pillar में there's not much theory, but it still becomes one of the most crucial pillars of a financial plan, because यहाँ कुछ सीखने को ज़्यादा नहीं है, but जब हम इसी को अप्लाई करने पे जाते हैं it gets really difficult. Why? Because यहाँ पे हमें discipline की ज़रूरत है. Often people knowledge gain कर लेंगे, they will know what all things have to be done, but जब discipline की बात आती है it gets really difficult for you to implement this simple step. हमारा third pillar of a good financial plan would be managing debt. जी हाँ, अपनी लाइफ में आपको कभी ना कभी एक ऐसा टाइम जरूर आएगा when you need to take on debt, be it education loan, home loan, कार लोन, इवन पर्सनल लोन. सो डेट इज समथिंग आप कभी भी अवॉइड नहीं कर पाओगे, बट इसी डेट को अच्छी तरह यूज करना इज समथिंग दैट ईच एंड एवरीबॉडी शुड नो. इसी को समझने के लिए विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपनी. ऑल ऑफ अस नो कि कंपनीज यूज डेट, they leverage debt to their advantage to increase return on equity, whereas the same debt, if not used properly, can prove catastrophic for any company. And अगर वो अच्छी तरह ना यूज कर पाए, ऐसी नौबत भी आ जाती है कि उन्हें bankruptcy डिक्लेयर करनी पड़ जाए. Same principles apply to an individual. If you as an individual are not able to use debt to your advantage, it will be the most destructive force for you. Whereas अगर आप debt को बहुत अच्छी तरह यूज कर पाते हैं, इट विल बी द मोस्ट पावरफुल टूल इन योर फाइनेंशियल प्लान. फोर्थ पिलर वुड बी इंश्योरेंस. जब मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, आई एम क्रिटिकली मीनिंग ओनली 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस. हमें इंश्योरेंस सिर्फ 2 टाइप की करवानी होती है. वन इज हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस. सिर्फ यही 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेज है जो हमें करानी है. हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस के अलावा और कोई भी अगर इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज ओनली देयर फॉर द पर्पस ऑफ डिसीविंग यू. उस इंश्योरेंस से आपको कोई फायदा नहीं होगा, बट एट द सेम टाइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपसे हैवी फीस और हैवी प्रीमियम ले लेकर आपके फाइनेंशियल प्लान को टोटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एंड जब मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इन 2 की नहीं बात करूंगा. आई ऑल्सो टॉक अबाउट इमरजेंसी फंड. इमरजेंसी फंड को मैं इंश्योरेंस में रखूंगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस. वी आर इंश्योरिंग आवरसेल्व्स ऑफ फ्यूचर मिसहैपनिंग्स. इमरजेंसी फंड को मेंटेन करना इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल. दिस इज समथिंग जो प्रूव हो चुका होगा आज के सिनेरियो में, जहां पे कई लोगों की जॉब्स चली गई हैं और वो इस इमरजेंसी फंड के दम पे ही अपने घर का गुजारा कर रहे होंगे. फिफ्थ पिलर इज समथिंग दैट आई लव द मोस्ट एंड आप सबको भी बहुत पसंद होगा, एंड दैट इज इन्वेस्टिंग. हम हमेशा चाहते हैं कि हाँ भाई, जितने से जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दें शेयर मार्केट में, जितना रिटर्न आ जाए उतनी हम अपनी वेल्थ बना ले. बट डू नॉट फॉरगेट, investing is just one part of a good financial plan, and similarly share market is just one part of a good investment plan. You must know कि investment can be made in 4 different asset classes. One is equity, debt, gold and real estate. इसी चीज को समझने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था where I talked about achieving 28% CAGR using an index investing strategy. अगर आपने वो नहीं देखा है, I'll put a link to that in the description and also up on the I button. लेकिन वो जरूर देखिए. उसमें I have proved why all of these investment classes must be included in your portfolio, in your investment portfolio, to get maximum returns and in order to build maximum wealth. सिर्फ ये 4 asset classes नहीं है, इन चारों asset classes के सब कैटेगरीज भी हैं. अगर मैं इक्विटी की बात करूं, इक्विटी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करें. डेट में हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें या डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें. सिमिलरली गोल्ड में हम फिजिकल गोल्ड बाय कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हैं और इवन एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स. एंड फाइनली रियल एस्टेट. रियल एस्टेट में भी 2 ऑप्शंस हैं. इधर यू बाय अ कमर्शियल प्रॉपर्टी एंड उसको लेट आउट कर दो रेंट के लिए एंड अर्न रेगुलर रेंटल इनकम फ्रॉम देयर, और
you can invest in REITs, real estate investment trust. And finally हम अपने sixth and final pillar पे आ जाएंगे, and that would be taxes. Managing taxes can be a very, very daunting task for a lot of us, but you must know that rich people are the one who pay least taxes. मैं जब ये बात कर रहा हूँ, I'm not saying कि उनकी amount of taxes that they pay are less, but the proportion of tax of their total income is much, much less than the proportion of tax out of total income that a middle class family pays. And do you know why? Because they manage their taxes well. वो taxes को manage करना भी अपने personal financial plan का part समझते हैं. And this is something that we must take away from them and उसी को अपने financial plan में भी include करना चाहिए. Although I understand paying taxes is not only legally necessary but also very, very important for economic working of a country. But this does not mean कि हम taxes pay करने की cost पे अपने financial plan को harm कर दें. उसी को समझेंगे हम आगे आने वाले वीडियोस में. So yeah, these are 6 pillars of a good and sound financial plan. अभी तो मैंने सिर्फ ब्रीफली ही टच किए हैं ये सारे के सारे 6 पॉइंट्स, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग इन डिटेल कि हर एक प्लान में, हर एक स्टेप में, हर एक पिलर में क्या क्या चीजें हैं दैट यू मस्ट नो, दैट आई मस्ट नो, and how do we leverage that information in order to build a good and a strong fundamental financial plan, stay connected and subscribe to the channel because we will be uploading regular videos soon discussing each one of them in detail. अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो and you're finding informative, do not forget to like because it really helps the YouTube algorithm for this video to reach as many as people as possible, and also share this video with each and every fellow member of your family. Till then, stay safe, happy learning.